It is my great honor today to welcome all of you on this special occasion. Today, we celebrate the launch of the first volume in a 4-volume series that brings together classic Buddhist scientific and philosophical explorations on the nature of reality. On behalf of His Holiness the Dalai Lama and his office, we would first like to especially welcome the Honorable Chief Minister of Bihar, Sri Nitish Kumar ji, for taking time out of his most busy schedule to honor us today with his presence. Without further ado, I would now like to introduce Dr. Thupten Jimbala, the general editor of this series, to give a brief introduction of the book, Science and Philosophy in the Indian Buddhist Classics, Volume 1, The Physical World. Dr. Jimpa has served as His Holiness the Dalai Lama's primary English translator for more than 30 years and is currently, among many other responsibilities, chairman of the Mind and Life Institute. In order to save time, we have also asked Dr. Jimpa to briefly introduce the book, both in English as well as in Tibetan, for the benefit of the majority of the audience. Dr. Jimpa, please. Your Holiness, Honorable Sri Nitish Kumar, Chief Minister of this great Indian state of Bihar, ladies and gentlemen, I am deeply honored to have this opportunity to say a few words about this important series entitled Science and Philosophy in the Indian Buddhist Classics, which is being formally launched here in Bodh, Gaya today. This series was conceived by His Holiness the Dalai Lama himself and compiled under his careful supervision by a team of scholars over many years. It brings together classical Buddhist scientific and philosophical explorations into the nature of reality within a framework that is accessible to the modern reader. Of the 4 volumes within the series, first volume, which is being released here today, is on Science of the Physical World. By the way, those who wish to obtain copies of this volume, it will be available at the Namgyal bookstore located just outside this Kalachakra ground. The second volume on mind science will be available sometime this year, with the remaining 2 volumes on philosophy to appear in subsequent years. The creation of this series represents a truly historic achievement. Firstly, the careful extraction and organization of the views and insights of the great Indian Buddhist thinkers within a framework of scientific inquiry is in itself a revolutionary achievement in the history of Buddhist thought. Thanks to His Holiness's vision, contemporary readers have for the first time an opportunity to engage from a scientific perspective with the ideas and insights of Indian Buddhist thinkers like Nagarjuna, Chandrakirti, Asanga, Vasubandhu, Dignaga, and Dharmakirti. They can read their actual words and follow their arguments. Secondly, these volumes have the potential to make a significant contribution to the history of ideas. To date, the history of ideas, especially of science, remains predominantly Eurocentric, with little attention paid to the great civilizations outside the Western world. These volumes on science, however, document a sophisticated tradition of scientific thinking that flourished in ancient India with investigations of atomic theory, the nature of time, the concept of multiple world systems, embryonic development, the function of the brain, and microorganisms within the human body, and so on. In particular, what the Indian traditions have achieved in the domain of mind science remains unparalleled even today. The great Indic schools of Sankhya, Nyaya, Vaisheshika, Mimamsa, Vedanta, Jainism, and Buddhism have all developed sophisticated understandings of the workings of the human mind, as well as meditative techniques for training and regulating our mind and emotions. Thirdly, given that all the classical Indian sources gathered in these volumes were drawn from the 2 Tibetan canonical collections of Gangyur and Tengyur, most of the texts being translated from Sanskrit, the creation of this special series also represents an important gift to India and to the world from the Tibetan people
and the Indian traditions that the Tibetans have kept alive. It is most fitting that this historic series is being launched here in Bodh Gaya, which lies within the state of Bihar, where the great Indian monastic universities of Nalanda, Vikramalashila, and Otantapuri once flourished. I see profound symbolism in the fact that the Honorable Chief Minister of Bihar is joining His Holiness, the Dalai Lama, in the official launch of this series. It represents the joining of the traditional guru and chela, teacher and disciple, that is India and Tibet, in honoring their shared heritage of Indic knowledge and offering these as gifts to the larger world. His Holiness always maintains that while the religious aspects of the great Indian traditions are relevant to the followers of their specific traditions, the scientific and philosophical aspects of the writings of the great Indian masters should be recognized as having universal relevance and importance. And so lately, His Holiness has been speaking about his commitment to help renew the awareness and appreciation of the knowledge of the classical Indian traditions, especially among the younger generation of Indians. Today, with the release of the first volume of the series and the Hindi edition scheduled to appear within this year, it is my hope that a part of His Holiness's important aspiration is being realized. With translations into the world's other major languages underway, there is no doubt that the series will reach many people across the world. Personally, as a humble student of His Holiness, and as someone who was trained in the Tibetan monastic education system that focuses on the study of the Indian Buddhist classics, it has been a truly profound privilege to serve as the general editor, both of the original Tibetan as well as the English edition. While I will recognize the names of my Tibetan colleagues in my remarks in Tibetan, let me take this opportunity to acknowledge Dr. Ian Coughlin, who undertook the English translation of the first volume, and Dr. Sue Dechen-Rochard, who undertook the translation of the second volume, and our publishers, Wisdom Publications in the United States, and Simon & Schuster here in India. Thank you, Your Holiness, and thank you, Honorable Chief Minister, and thank you all for being here today. Thank you. Dhanyavad. Aje sishi tuken chino khonsa changwe chimbu chodan Bihar nga de lönjen kushab Nitish Kumar cho ganden chirmche saje tizirmche ken le su ladu gi shenamba shenyan de pepe seje pomlengela darin de chino khonsa changwe chimbu chodan Bihar nga de lönjen ni ne nesho doji dendu nangbe chenri da taru kundu je pöten injur unje nawe kapde kubar pöten kejen di ngodo sikhashi ji shugyu khogop tobane keba shindu sangbo ngonjen shuyu Pöten de chino khonsa changwe chimbu choni ge gongshe da kalo lamden wo keba ge shekha ji ge lomangbur ngewa tende chedu digbe shi chayu kundu ge pöten de la lebam shi yu jin chenri ji ko la chi su jen ji ko da nan sem ge namsha ge ko che sosur pö re chen pö ni da tene tadu ri be ko le pö ni je yu tren kap su baba ne chenri kundu ji pö thang bu ingju unje nang ju de Tian chino khonsa changwe chimbu choge gongshe lana mebar payu ge nangbe shung nam ge jöja la Shingubyo namshagam tsenrida tadruk choje lalenje sumdo yerungwada. Dii tone tsenrida tadruk namshani surudu koydon chede. Lebom loso diktuba chungwa dene nawa sanjebe temba jigdenter thane melo nidong ngaja hako songwe loyu ringbu tina sardoyoge zeje shindu chenpo shidu kyuriyo. Dii gengi jigne tingsang zamne sanne mangbor rangi nangba yemeda nangjo la teba yoyme la mateobar. Shieje dushige tene unje nangbe lobyon chenpo namge 공부를 yapse tabu다 토메 구제 초랑 yapse tabu she반남 딩럽게 체리다 따루리베 남네 또십 적유요 바다 대다 슝게 차셰카 중원소 로토바 대신도 개바 되는 거 리버 참여하는 게 로주 소수 용규요 바제기 그거 표도바 중요 니네 파유 여러분 개배 왕부 되는 게 체리겠네 배나 최소 뇌주게 직된 차주네 중사 수쟁게 추게 좀씩 뒤타르게 바다 대신도 토마랑에도 인잠 조주네 타르 치외린 배갑게 남시에다 롱타라 팀주게 바다 셴야 뒤중오다 뒤지 통다 제제게 체계 남샤 케버도 나샘감을 배고라 로유런 주주다 차단소 용토게 오다 첼레 대달라 등진 저주소로 남배숑도 셰바 띵삽진 신도 10차보 여반남 군두지 뼈ten 디규네 계지 케버지다 학벌 체리만 남게 로제렘베 이그 신도 개천시도 준토바 총유 숨내 군두지 뼈ten 디나 남배 체리도 따르기 꼴라 초지 슈바 타다 랑레 까덴지다 학벌 땡규르네 뛰어 바시 임바데 군두지 뼈ten 디바테 란자 벼메리다 벼그리 슝이게 토네
야가단 잠린용라 계상부시 pyutuba chongyoba ngunzu shuguyu. Tarin diri nejo doji dendu, jino khonsa jamgun chimbu chonne nangbaya tsenri da tawru kundu pyo tangbu ingyu unje zebe qabdari Bihar nga de lunjen cho chejar nawa ter tsundun chimbu shigyoba tonggudu. Tene lugyu gu tonne lalubdu gyurube yagadan pyoni songzhe gu tonne tumuwe jenondo gyube pawyu gu nangbaya rikbe shunglu nam geji dingje ding sendun zede zamlin ji sheje zoyde chukdu tongwa shida tonggudu. Pyoren di geyi shendu gyurubala chashana pyo 당분이게 갸게 튼신라 힌디 로디나 튼규다 대신도 잠린게 신 제가 신근당도 규르신배 뼈된된 잠린나 캬베 신도 첨부시용와 슈목을 게르경원의 슈나 라니 게르경원의 슈나 진노 건설 jam구 첨부 로메 제대로 똑바시 임배 차네 달래 군두게 뼈된디 초디다 인규르기 니게 또 샵슈 고급 토바드는 수수 미제나게 소남 초베 시체쇼시도 먼저 슈구유 다들 군두 뼈된디 초디게 레드토 로마리 배전 첨부 나외 라마 계신 남 레르네 천된슈나 좀디 초종 그 초조 남자 캠프 세지 좀 더름지 좀디 gen진 처음에 세르메 계시 양대는 부치다 제 롤린 계시 투된 배상 남자 결론 투된 양배 좀디 봉을 가샤 캐르 뭐지 계시 장주 상계다 제 롤린 계시 강원 상계 가장 계시 지사 중间주구다 고마 제 고만 계시 로상 캐조 제인 그네 달래 창면 삽슈데 레든 디톤에 소남 지사바남 진노 건설 jam구 첨부 쪽 구즈샵의 유도 된지 투시의 현지 주변 체단 현된다 조장도 오쳐바슈 소남디 탐제 세바이 고반톤에 균지 자도데 가다나다 치웰로도 세베솔은 도원도 투지지 Thank you, Tupten Jimbala. Taking this opportunity, we would also like to recognize each of the committee members for the compendium project. I would like to first call upon Gishil Haramba Chomdo Rinpoche, Abbot of Namgyal Monastery. Next is Gishil Haramba Yangde Rinpoche, Office of His Holiness the Dalai Lama. Third is Gishil Haramba Chanju Sangye, Abbot of Gande Shalse Monastery. Fourth is Gishil Haramba Chersa Rinpoche, Gande Changje Monastery. And fifth is Gishil Haramba Gishi Kejo Jebun Goma Monastery. We also want to recognize one other member who was not able to come today, Gishil Haramba Ngawa Sangye from Jebulosaling Monastery. We would now request His Holiness and Sri Nitish Kumar ji to please jointly release the book. Thank you. We thank each of you for releasing the book today. We also would like to let everyone know that the Chinese translation of this book was also completed. And for this, we would like to recognize Dr. Jamyang Rinchen, who was the primary translator for the Chinese project. Now I would like to request Sri Nitish Kumar ji, Honorable Chief Minister of Bihar, to address the gathering. Param Pavan Dalai Lama ji, Garden Tree Rinpoche ji, Sakya Trijin Rinpoche एवं सभी रिनपोचे एवं सभी कैंपस और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव,
मगध डिवीज़न के कमिश्नर श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी, मगध क्षेत्र के डीआईजी पुलिस श्री विनय कुमार जी, गया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह जी, गया की सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीमती गरिमा मल्लिक जी, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी माननीय श्री नांजे दौर जी एवं बोध गया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के सभी सदस्यगण और इस कार्यक्रम में देश विदेश से आए सभी श्रद्धालुगण, आज मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होकर बेहद खुशी हो रही है। परम पावन दलाई लामा जी से मिलकर हम सबों को बहुत ही आंतरिक प्रसन्नता होती है। और पिछले वर्ष काल चक्र के दौरान भी आने का मौका मिला था और इस बार ये खुशी की बात है कि परम पावन दलाई लामा जी पुनः पधारे हैं और बोध गया में ये 3 दिनों का जो कार्यक्रम हुआ इसमें उन्होंने उपदेश दिया और आगे भी बोध गया में कुछ समय तक निवास करेंगे। मैं सबसे पहले उनका हृदय से स्वागत करता हूं और हम सब लोगों को बड़ी खुशी है कि आप पुनः पधारे हैं और बोध गया की ये पावन भूमि जहां भगवान बुद्ध का इनलाइटनमेंट हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और हम सब लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी ये धरती, हमारे ये सूबा बिहार, वहाँ ये बोध गया है और इसी बोध गया की धरती पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आज जिस प्रकार से उनके बौद्ध दर्शन को लोगों ने पूरे दुनिया में अपनाया है, तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और आज के इस कार्यक्रम में परम पावन दलाई लामा जी की उपस्थिति में उन्हीं की प्रेरणा से जो तिब्बतियन बौद्ध विद्वानों की समिति द्वारा इस पुस्तक को विकसित किया गया, लिखा गया, साइंस एंड फिलॉसफी इन द इंडियन बुद्धिस्ट क्लासिक नालंदा ट्रेडिशन। हमेशा परम पावन दलाई लामा जी नालंदा ट्रेडिशन की बात करते हैं। जब भी मैंने इनको बोलते हुए सुना है, हमेशा इन्होंने कहा, और तिब्बत के लोग इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हैं परम पावन दलाई लामा जी की प्रेरणा से। तो हम सब लोगों को ये जानकर खुशी हुई कि ये पुस्तक 4 खंडों की श्रृंखला है, जिसका पहला खंड भौतिक दुनिया तथा दूसरा खंड मनोविज्ञान से संबंधित है। खंड 3 और 4 विशेष रूप से बुद्ध के दार्शनिक विरासत की व्याख्या करता है। यह परम पावन दलाई लामा जी की प्रेरणा है कि समकालीन पाठकों को पहली बार यह अवसर प्राप्त होगा कि वे भगवान बुद्ध के विचारों के वैज्ञानिक पहलू, उसका जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है, उसको बहुत ही आसान भाषा में समझ सकेंगे। विचारों का वैज्ञानिक विश्लेषण बौद्ध दर्शन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और जब मुझे यह मालूम हुआ कि इस पुस्तक का अनुवाद अन्य भाषाओं में किया जाएगा और हिंदी में भी किया जाएगा और इस साल में ही हिंदी में इसका अनुवाद प्रकाशित हो जाएगा, मुझे बड़ी खुशी है। अगर हिंदी में इस पुस्तक का अनुवाद प्रकाशित होता है तो बहुत बड़ी संख्या में लोग बहुत आसानी से और आसान भाषा में जो बौद्ध दर्शन है, उसका जो वैज्ञानिक स्वरूप है, उसको जान पाएंगे और समझ पाएंगे। परम पावन दलाई लामा जी के द्वारा तो हमेशा इस बात को कहा जाता है कि मनुष्य को आंतरिक रूप से शक्ति मिलेगी और वह उसका जीवन सफल होगा
अगर वो राग, द्वेष और मोह से मुक्ति पाए। और इन्हीं विषयों पर आपका उपदेश 3 दिनों से चला है। हम लोगों को बहुत इस बात की खुशी है और जीवन की सफलता इसी में। हम सब राग, द्वेष, मोह इसके जाल में फंसे रहते हैं। इससे जब मुक्ति होगी तभी सही मायने में जीवन का मतलब होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस पुस्तक का विमोचन हुआ और उसके और खंड जो प्रकाशित होंगे, इसमें जो वर्णित ज्ञान विश्व कल्याण, विश्व शांति और विश्व बंधुत्व जैसे महान मूल्यों को एक नया विश्वव्यापी आयाम देगा तथा बौद्ध धर्म एवं उनके विचारकों के धार्मिक एवं दार्शनिक आयाम के साथ साथ उनके वैज्ञानिक आयाम से भी लोगों को परिचित कराएगा। अभी जब कहा जा रहा था और 3 जगहों की चर्चा हुई, it is most fitting that this historic series is being launched here in Bodh, Gaya, which lies within the state of Bihar, where the great Indian monastic universities of Nalanda, Vikramshila and Udantpuri once flourished. मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ राज्य सरकार ने अपनी पहल पर जो खुदाई की है वो नालंदा से बहुत दूर नहीं है। तेल्हाड़ा नाम की एक जगह में एक और नया विश्वविद्यालय उभर कर सामने आया है और जो कुछ भी खुदाई हुई है उसमें 2nd BC तक के बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई। इतना इम्पोर्टेंस तो नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, तेल्हाड़ा ये तो ज्ञान का केंद्र रहा और इस ज्ञान के केंद्र को में परम पावन दलाई लामा जी आते हैं। यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी इवेंट होता है। अब जो कुछ भी भगवान बुद्ध ने हमें बताया और ये जो भूमि है ये तो अद्भुत है। यहाँ पर अनेक चीज़ें हैं, ऐतिहासिक भूमि है और यहाँ पर जो कुछ भी जो भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात कही और जिस प्रकार से लोगों को समझाया है, उपदेश दिया है, तो मैं इतना ही कहूँगा इस अवसर पर परम पावन दलाई लामा जी को कि हम लोगों ने बिहार में विकास का काम, न्याय के साथ विकास का काम, ग्रोथ विथ जस्टिस के सिद्धांत को ही अपनाया है और उसमें समाज के हर तबके का विकास। हम सिर्फ लोगों का ध्यान नहीं रखते, हम जीव जंतुओं का भी ध्यान रखते हैं, हम पर्यावरण का ख्याल रखते हैं, इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं और वो तो विकास कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने बिहार में समाज सुधार की दिशा में कई कदम उठाए। अगर शराबबंदी की 1 अप्रैल 2016 से उसको नशा मुक्ति तक हम ले जा रहे हैं और उसके लिए पिछले साल जो यहाँ काल चक्र हुआ था, काल चक्र पूजा के बाद 21 जनवरी को 21 जनवरी को ह्यूमन चेन बना था जिसमें 400 मिलियन लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। दुनिया का पहला रिकॉर्ड इस तरह का कायम हुआ और किसी चीज़ के पक्ष में ह्यूमन चेन बना इस बिहार के लोगों ने। इस तरह से लोगों ने अपनी भावना को प्रकट किया गत वर्ष और इस वर्ष, उसके बाद और उसके साथ साथ हम लोगों ने हमारे यहाँ जो 2 कुरीतियाँ और है, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज और डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा, इसके खिलाफ भी सशक्त अभियान चला रहे हैं। और इस साल 21 जनवरी को, जैसे आज संडे है, रविवार है, 21 जनवरी को, आज ही के दिन, रविवार के दिन ही 21 जनवरी को फिर ह्यूमन चेन बनेगा, मानव श्रृंखला बनेगी और बिहार के लोगों में अब जागृति आ रही। तो आप जैसे परम पावन दलाई लामा जी इस धरती पर पधारते हैं, मैं समझता हूं हमारे बिहार के लोगों को भी प्रेरणा मिलती है और समाज सुधार की दिशा में जो भी कदम हम उठाते हैं उसको व्यापक जन समर्थन मिलता है। तो मुझे बड़ी खुशी है और इस पुस्तक विमोचन के अवसर पर मुझे आपने बुलाया, इसके लिए मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूं। और
बोध गया तो हम आते ही रहते हैं, और ये अद्भुत भूमि है, ज्ञान की भी भूमि है, निर्वाण की भी भूमि है। गया ऐसी धरती है। तो इससे ज़्यादा हम सब के लिए गौरव की बात और क्या हो सकती है। और दुनिया भर के लोग आते हैं, हर साल आते हैं, काल चक्र में पूजा में तो विशेष तौर पर आते हैं। और आज भी हम देख रहे हैं इतनी संख्या में देश विदेश के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मुझे खुशी है, जो परम पावन ने मुझे जानकारी दी कि जो इंडियन यूथ हैं उनको भी आप प्रेरित कर रहे हैं और उनको भगवान बुद्ध के विचारों का, उनके दर्शन का जो वैज्ञानिक स्वरूप है उससे आप अवगत कराते हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम सब परम पावन दलाई लामा जी को फिर सुनना चाहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धा प्रकट करते हुए और पुस्तक के विमोचन के प्रति और उस अवसर पर बुलाने के लिए मैं आभार प्रकट करते हुए आप सब लोगों का, मैं बिहार की इस धरती पर, बोध गया की धरती पर, मैं आप सब का अभिनंदन करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। We would like to request Professor Samdong Rinpoche to give a summation in Tibetan of the Honorable Chief Minister's speech. Bihar ngadi jijab lunchin Panden Nitish Kumar Choki Sungshe Nidu Jigye Bugeg Tola Rajur Shugim Kong Toma Konstangun Chimbuchola Gujango to Tane Gaden Chirim Chotan, such a Trizim Chog Ube Lachin Nambasuta, Givishnian Nambasu, Javigunujdi Jacob Mambune, Pebe, Chushua number, Samalala, Darin Kurande, Konstangun Chimbu, Gatan Tune, Ganen Chive, Chade Sarvachi, Unjanagi, Duzundela, Jartubati, Kawa Sambatan, Sunam Chimbu in Gongu, Sanje, Numbertuba Sanjebe, Nanchever Chenchi, Yimbatum to Mansebe, Di Jela, Bihar ngadi Chun Yong di Chitang Nangbatang, and Habertu China Risuma Chibe, Jagagi Sujungi, Shiyungi Tene, Chimbuchi, Chane, Deyubati, Same, Chinseris, Tanda Penjela, Mazu Shinyalia, Nalenda, Bigram Shila, Udendpuri, Desumbuti, the Yondaris, New Charla, such a Motor Chebe Kavlia, Nalenda, the New Sane Chilia, Young Nambe Mungi, Shiyungi Nash Sarvachik, than the New Yungdus, the Rayinsa, to step in, to Manyangan David Jelia, Bihar Ngaditi, Chuda Rishung, Rine, Rujung Tene, Jachimbuchi Yimba, Shema Waris. Tindenala, Constango Jimbuchoki, Tosi Chimbu, Gaya Lia Yang, Shabsur Koyatang, and Jun Rimbushut and Jaya. Tezo, Kransu, Ngati Chiyungi, Sonamgi Chashir of Chikta, and Habertue, that in the Nambe, Shunru Jachimbune, Senri Tang, Shingobineluki, Rimbatcheti, Sondun Nane, Deb Shignal, Chodu Nambati, Misegi, Joan Chimbuchike, Lojugnala, Kuber Yube, Joan Chimbuchre, Nambe Shonru, Hajan Jachimbu Insan, Yuludu Mabatan, Power to Tusu Mangan City, Sangma, Jetuya Kabuti, the Kange, Jetuya Chita, Dilel Habe, Gayi Mangunala, Jurnambati, the Tanda Penche, Mim Manguchiki, Nyam Matube, Netu Chigitolia, Nyam Tuya Sunamti, Jangurumchi, Lanamabin, Till Jesuran Shuyus, Harbor to Nambe Shunlu Tang, Nambe Shune Shebe, Tadu Namshat City, Tingrab gets Seriba and Yamdola, Jewachane, Tingrab gets Seriba Sujan, Ditola, Tonan Chimbotang, Luji Chimbulan Tubati,
nguyu netu jashun rab sabachires jashun saban di jongjulia romeri chiyonglia ngudungi keben chimbuchi je toyaki riwasama imbe iche je toyachi chagi yores an habartu konsachoki chir jeji nashunsta habartu jagagi nashung rilia rang nayu rishunda shirila tona je goyagi bugu nambati lapchingi zetinjire ene tizole kantutu kranzu jabju shuyagi bezun shuyus ane longema tuwa wanchingi shuliya ngadi nala nyuze kadum je chara kadum jebe jeliya ane memangi mi tingwanji subri dinala me halam 30 shitsigi chashelian tuba chongyore an taluyan tinashingi me tingwa rimbuchi suyare dila tene Kuranzu ngumbar ube chawate zula mansoki jabjurdan senshuka zuyubati tsuntubachiris an dila konsuchoki tomyuntang langlongyowe jinlab naranas ani yane yanto ngadin dedang hawartue dojidanle shabsur koyatang an chujikolu jumachiba kure sunde shuyus an dedang samshak yinsons. Thank you, Rinpoche. It is now my humble honor to request His Holiness the Dalai Lama to address the gathering. Lo mongbu dang mo shi. Ngana tanege. Ke shazada namju yedewe. Chief Minister Kerang dang 엔들때다 지금 청안 뒤에 다 배지 요래 엔 가서 그냥 가도 돼다 좀 되베 엔 세계면 맞지지 엔 상황을 쉬어야 해야 들이디 믹스지 차려래 엔다 생리 군두기 안다 탭지다 텐체 이 안다 인지나 교섭이 다 지금 운지 소리지 기분이 다돼 청아 된지 주제 관계 배치 대독스나 토리 지금 strategy 둘이 최세 쇼인 공믹스야 토나 여기서 리샤들라 이게 빠나리야 지금 남배 가서 오다 지 인내를 직 주세 냐만 아무게 침벌이 그럼 믹스에 더 나시는 것도 먼저 최저 어떤 샤베이나 다시 노동장원에 지신의 좀 된데 셰시베 그도 도와지네 레그 저와이 되는데 영매서 말해 에디 비하 chief minister 차야를 내 뒤뒤는 지신 싸요래 에디 다 chief minister 비 잘사고 싸요래 미제리 셔부지긴 간에 엔데들 청아 페버리 투시체 수인다 다 탭든지 지기 써야 돼 다 도망한다. 맞아 자갈 렌조데 잔조세 렌조데 아니 지금 소소롱변한 게 강에다 디리체 앵아저데 톰마상체니 로컬을 스투스데브레 데네 칼레 파수 지금 점물링 나래야 워시버 몽구차 하버도에 캐베 공부 아니 천리고 데네 몽구 투니 용두자네 아니 신에 난주 신주간에 로송 제샤베 지 삼감리고 쪼르규베 간다 데즈차디 지 점물이 디간라 드름 주서시고 드름 니슈바다 드름 주서시베 난데
저여도지. 공에서 되고 사용기. 자, 너네 인도산에 다 말한서 남주 지 건주된 주스니 이게 미 뒤틀려 쳐라야 서로 엔지나 이니치베 송댕 지 대버셔서 말함자서 유주도 사셔마도 비치랑디 다음에 롬니 원은 자네기 그게 슝 다첨보다 되니 롬니 칭해줘도 당연히 여러마도시 지단 용용스럽다 다간다 건조된 요기 슝디 나로라 부드스게 사수제도 나로려야 저저도 대전치베이나 샘검리고 다가는 신기 아니 샘을고 대주제디 그 지당의 신연나를 샤샤고지래도가 애를 하버를 들이게서 뒤줄이야 남도의 상황도 줄배 왕기 다 미스베 강에 먹고 싶시당 아주 통sul 이해들이 다 세상가 딘데기다 심 남도의 상황을 치니 너나 차당의 상황을 침배경기 강에 먹고 싶다더니 강에 세더디 고수 표시신의 시도고 말해 용의외 터네 강에 세도고 말해 생감을 리뷰 터네 생 나로려야 지기 레도가 남도 먹고 지 자와 차당을 땡땡에 딘데지 용도버 주체려야 그게 또 그게 로당 근데 이부터 주체식시 그다음에 간다지기 차당의 상황을 침배이나 랑신 이후 모두 매드부터 주체디 치심에 계시기 요말에 타르바도 탐지 캠베 걸 시기 요말에 니리 미진나로야 디디 나가 팬도 내가 가려버려 주제 망지 시에도나 그래서 딘제 인도 지 딘제기다 아주 건조된 유나는 송샤바 삼컴 리뷰 거다 애니 삼컴 리뷰 거가 그게 자와로 제 인도산에 룽레 송샤 세네 룽잠로 따버 많이 봐 리베 잡아체네 달라 보여야지 있다 예배 인도 다디 건주된 주 남배 배셔레 센도 샤샤나 먼저 통수 저선 건주된 주 부드스게 나리야 제제 찬에 독스 여와쳐봐 있는 천리 대전직 떠루고 대전직 얘네 추억 대전직 좀 여쭤버려도 최저 어디에 남바조를 말도 현단 정확해요 말에 나 떠르고 거네 배너 퀀텀 피직스 대디 차샤나 산제베 배날린데 케베 공부주 떠르디고라 되되네 투난다 지 리베 잡아체네 그 템베로 코로나도가 애니드네 샘컴리고 지 공연 시에바다 이로 딘데기단 로다로 드스체디 지 14호 지 예배 인도잖아 다디 아주 지당의 신용나려야 루제 로존시아 예대버지 다 딘데지 쳇투야래라 쳇과야래샤 도스세니다 그유된유 부드스미를 하지버디나네 아니 천리고 또 생감리고 또 집에 천리고 뒤리 수두지체 아니드네 떠루고 지 14지 정도 있네요. 떠루고를 염십신에 줄라 이 팽거와. 그래서 달로 해지다 주장 침벌이 로주장 침벌이 딘디지 제투는 야고 만들었어. 제니 이네 도망 거도 안 되면 자갈 호절이야. 그러다 급지 이네 경험 먹고여서 내 섬주디 직시비 근데도 왔어. 그 상황에 디야우도 선도 송기. 엔트는 아주 대창아 에 기신다 뭐 그래서 하시지 주시. 엔디 거리야 님십체네. 에노 다 태비도 스탬버리. 세상가 들이한다 고급대 장소다. 기신다 장소들이 후다바다 님십체네. 에는 간다 대 흉생 들으시다 땜버리
수치했습니다. 대다 첩지 이니 게이 신다나라 지금 인지나를 줄이야 나가는 시 게이 나를 줄이야 엔다 안다 힌디 나를 줄이야 고주여를 때 안다 사요 말에 나가는 시 쏘게 나를 줄이야 우르스게 나를 줄이야 아니 대다 텐드하겠다 게이 몽구 나를 돈한천이 줄이야기 간단 고주여래 자, 들은 인도디 생검을 리그에 거하다, 참을 리그에 거하성에디 신윤그 대전나를 샤네 밑질이야 첩투야지. 이 그거 이번에 안 되긴 해줘야들이 전물니 남도 시번 남도 총지 레레라 시우지 추구스도가 이 신윤그 탄에 롭종 전이 삼류 남도 디디기 두 컨트롤되는 연구여봐, 게임 컨트롤되는 연구여봐, 디 첼레 컨트롤 연구여봐, 그런데 근데 그런 믹스에게 롭종 전이 최대한 게 된다라. 리뷰 최대한의 첩지 하나 샘그 최대한 게 하나 단 제니 진짜 롭종 시켜야지. 그 영향을 셔. 근데 몽구지 계시여봐 그돌이야. 대 미든다 천리배 나로네 몽구지기 대 미든다 겹겨 용되기도. 저상 어당 아주 들이 대비 다 지금들이다 턴토르라 엔다 고르베르베기 지금 도전으로 봐 자체스 정도야지. 야 낭수 빼야겠지 말해. 저게 낭수 나네 지금 미칠이야 샴디 주트야로 가르도가. 나 디게 미칠 편버치기 샴디 주야도 해버려. 이 출루 빼야겠지 말해. 봐. 아니 지대거 봐 보면 사진들 그 수업이 계속해 요 말해. 다 생감 리뷰 거다. 아니 생활 리뷰 거디 셔되고요. 근데 네 인도 다 들으시면로 들으시려샤. 다 리뷰 못은 더동이니 되게 님십 심주 체제. 나를 매일매일이야. 가서 우리 되게 레기피야. 나를 매일매일 용도 가버려. 엔데네 안당 안주식 셔 대학에 리중디에 자자가 리중 사대요. 나랜드 개별 공부주 어떤 거네 이 자가를 대주 예대배 좀 전에 고란 차샤네 자가를 대주네 지금 생감을 읽고 신내다 항동 연대기다 가자지 르네 시윤시 예대게지 이 심어샤네 좀 전에 고란 게 더동 못이니 다시서 뭐시나 님십 난체 에미 가서 우리 그게 개발망구전이야 가다음에 투그다 콤바된다 여대버리 된저기 gen시어레데 하나 통문항올이야 대지 자가를 열심히 리슌 디터네 다 선심된데 된지 중보로 봐 에는 공기 gen장 나라 다 루루 yap사로 써봐 에는 천원 쳐자로 써봐 다 대주제디 뭐냐 전에게 배 필로소퍼 아니 로지신 할 레벨도가 개별 공부 쌈게 비교 정도가 애는 아주 별 샤샤네 ken시 시어스 투지거니 ken로 쇼승구 투지거니는 때네 나 나렌데 리슝디디 아주 별 지금 뭐냐 자네게 배 따고 태성 곰숨 숭둔제 타네 따고 자야 돼할 레벨 됩셔 별이야 나는데 개별공부 중디디 싸워로르신 저거 치르네 마 샤바체 대조 간절을 때네 마 샤바체야 엔디디 마 단을 포위인데 각사 뽕송고 토네 마다 단을 포위야 진지지 강리야 땅 아주 다구점네 여대버디 다자 처음에 중디디 중국이 나는데 개별디디 중국 자가를 삼으러 나디 벌거 냠자 시부 신데버디 다 신의 지 라수치야기 그거 들지 갈래 인구야래 땅 아주 들어 원견을 줘봤다 야학 리슝 든지지 땅 아주
롭종 셰셰 팬도 요래 가요 라요 어다 팬도 요데 리숑디 다 자메 딱고 자가르지 다 자가르면 나로 디파도 스칼레클레 잡수 쳇야지 또 당한주 미 자가게다 추유 참을로 간주데 잠디 슈트하게 요마르데 날린데 추유고데 당한주다 로동자 하거든요 켄시 시오스 로면 까말을 실려다 전랑게 타네 디디다 간주 로종체 아니 냠린체 뇽지 턴체 딘데기 타네 리셰자 여더버지다 간주 여더버지 다 자가 나로라 지금 렉기 피야 지기 약수치 돼야지 이때 저기로 소리도 다 벌거 왔던 게 자가를 미망굴 뒤셔야 되게요래 하나 싫어지기도 자가 난 게다 죽을라 랍다 유니버시티 망구 타네 타나 제기도 자다 제리 인도 다 타나야 정해 연배 그도라 지금 그게 로종 줘야다 로종 제약이다 탭든지 고유하래 베르든지 고유하다 들어간다 탭디 딴데 편도 연구를 해서 함정도 그래서 단디 양초지네 나도 배바대 배배면에 샤베이는 딘디간다 건주된 부드스움들 하수제들이 정말 비나요. 지금 배날린데 떠루 생금을거든 즉 떠루 십신 차와 뼈 타고 지금 타네 리시자라 배가 약실을 이거도 배배 시집지래 먼저도 배이 매부스 꿀레 쉬우시점 버려라 꿀레 전에 양압하게 율 대세 대투기 배 시세로 큰데시 여더버디 폐실 야독선 냠바지 총거지 폐실 배지 매부스 폐실 자샤 야가기 슝디 되기 제바의 양지 배지 개별 30번대 부디 치라가시도 남벌로 것이다 나로 하람 드리면 누가 다디 배 미리기 지금 남주다 지기다 가서 준주 미르는 미르는 준주 근데 요들데 천퇴하서 수도 배 미리기 지금 찬동다 지금 배 미리기 지금 지지로 또 천퇴하서 그리스도가 자들이 인도 어다 안다보다 가서 도 샤베리 다 하나 계시시 다 안다 미 응외윤의 저 탈이야 로드니 꿀레경에 지나서 뒤에 꿀레경체 뭐는 지기다 제지 찬스 제지리 이내가 민감부셔 인상 제지가 무엇도 내 기지도 거래 그래서 도시 애니 그냥 성으로야 투시 수인 이런 거는 배변거는 차샤네 된데기다 지금 리숑 띵섭시 여대버디 대버지고 신대야 말에 로중 저거래 아주 별이 지금다 갱근즈 보라다 몰라져 그저 투두기 로중 지하데 배 계셔버다 나 다가서 안들 자연스 다 배주 되어 있는 내 아무라 나도 야갈 도만 줘주잖아 아무나 비입 해주셔 로칭 말에 이네 아주 야갈 줘 무술이네 고주셔 아무나 비로야를 우주견이 저거 된다다 지금 이 거리는데 도든데 뭐 아무나 로야든데 나머리 다 우주견이 된데 중머리 시간도 슬림베 그게 휴식 말이 슬림베게 이 자게 창조를 접대하지 못하고 식말이 근데 우주견들이 연구도가 세상 지나서 때 몰라서 당간조 계속 다가게 지하면도 사디 몰라버체 그래서 일본 남고 치양 없으니 송야들이 어다베 선이 칭해지니 들을 놓고를 쓴 송도가 현재 개발 뭐 주장 야와치모 저이 노르르니 랜더 총선이 주시 사변의 송야들이 로종 당도 셔래 그래서 아주 별이 지용 차네 다 히말라야 리유딘데 지용 차네 대바 할래버요래 다 대바디 남주 실업 숨도 되는 로도야디 뺏게 하신 분이 그래서 나이 저시들이 도시 아니 양자 집은 저래 도시 그게
Holiness. This concludes today's program. Once again, we would like to thank the Honorable Chief Minister of Bihar, Shri Nitish Kumar ji, for taking time out of his busy schedule to be with us today. We would also like to thank everyone in the audience for sharing this special day with us. Thank you.